हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। होप यू ऑल आर सेफ। तो जैसा आप सब स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, पोस्टपोन जेई एंड नीट, सब लोग इसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। फिर चाहे वो स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स हो, पॉलिटिशियंस, न्यूज़ चैनल्स एंड नो डाउट यूट्यूबर्स भी। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं। तो आप सबने सुना ही होगा कि आलोक श्रीवास्तव, जो कि एक वेल नोन एडवोकेट है, उन्होंने स्टूडेंट्स का साथ देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी जेई एंड नीट पोस्टपोनमेंट को लेके, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी और ये कहा था कि नीट और जेई मेंस डिसाइडेड डेट पर ही होंगे। उसके बाद मिस्टर सुब्रमण्यन स्वामी, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इन राज्यसभा, उन्होंने एक ट्वीट किया था जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। Have just spoken to the Minister of Education suggesting that NEET and other exams be conducting after Deepavali. The SC order the other day is not a bar since the Honorable Court has left the date to the government. I am sending an urgent letter to the PM just now. मैंने एक इनका इंटरव्यू वीडियो के लास्ट में डाल दिया है, तो आप ज़रूर देख लेना। तो इन्हें भी इस कोविड-19 पेंडेमिक में एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाना सही नहीं लगा। तो मैं भी यार कुछ फैक्ट्स रखना चाहूँगा कि क्यों एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं होने चाहिए, कम से कम जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 27 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक ट्वीट आया कि नीट और जेई को पोस्टपोन कर दिया गया है। ये 27 मार्च का था और टोटल केसेस 27 मार्च को 82 थे। मतलब 882 केसेस पर जेई मेंस और नीट, इतने बड़े एग्जाम्स नेशनल लेवल पर कंडक्ट होना सही नहीं है। उस टाइम एग्जाम्स लास्ट वीक ऑफ मई तक पोस्टपोन कर दिए थे। फिर हमारे पास 22 मई को एक और नोटिस आता है एनटीए की तरफ से कि एग्जाम्स दोबारा पोस्टपोन कर दिए गए हैं टिल मिड जुलाई। 22 मई को इंडिया में टोटल केसेस 1,24,000 थे। मतलब 22 मई को भी इन्हें यही लगा कि इन सर्कमस्टांसिस में एग्जाम्स कंडक्ट होना सही नहीं है। उसके बाद 3 जुलाई को हमारे पास एक और ट्वीट आता है डॉक्टर रमेश पोखरियाल की तरफ से कि अब एग्जाम सितंबर तक पोस्टपोन कर दिए गए। तो उस टाइम भी केसेस काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन अब इस टाइम 20 अगस्त को 70K के करीब केसेस पर डे आ रहे हैं और टोटल केसेस 3 मिलियन मार्क को टच करने वाले हैं। तो अब एग्जाम्स कंडक्ट कैसे हो सकते हैं। तो अब कई लोग कहेंगे कि नहीं यार, सारे SOPs भी फॉलो होंगे, सब कुछ अंडर कंट्रोल होगा और कोविड होना काफ़ी मुश्किल है। मैं उनको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहता हूँ कि अभी रिसेंट हुए एग्जाम्स में दिखा दिया है कि कितने SOPs फॉलो कर सकती है गवर्नमेंट। ये जो फोटोज देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो कॉमेड के एग्जाम की फोटोज हैं कि कितनी अच्छी तरह गवर्नमेंट ने SOPs फॉलो किए हैं और सिचुएशन भी अंडर कंट्रोल ही थी, आप देख सकते हैं। और ये JEE एग्जाम की हैं कुछ पिक्स जो आपने बहुत पहले भी देखी होंगी। और इन सब के अलावा हमारी कंट्री में कितनी जगह पर फ्लड्स आ रखे हैं और न जाने कितने स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी एग्जाम्स देने के लिए बाहर जाने की। लोगों के घरों में पानी भर चुका है यार। और कई बच्चों को तो दूसरी सिटीज़ में जाकर एग्ज़ाम देना होता है, उन्हें कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी इस ट्रांसपोर्टेशन में। कई बच्चे अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। आपने रिसेंट एक केस के बारे में सुना ही होगा कि एक 19 साल की नीट एस्पायरेंट जो कि तमिलनाडु सिटी से बिलोंग करती थी, शी कमिटेड सुसाइड। ये कोई छोटी बात नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स के सुसाइड केसेस के बारे में आप सब ने सुना होगा इस लॉकडाउन में। कितने ही बड़े यूट्यूबर्स ने भी इस बात को समझा और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि जेई और नीट को पोस्टपोन कर दे, जिसमें कैरी मिनाटी यानी अजय नागर ने भी ट्वीट किया और आशीष चंचलानी, जिन्होंने इस लड़की के बारे में भी बात की है, और भुवन बम यानी बीबी की वाइन्स चैनल के ओनर ने भी नीट और जेई को पोस्टपोन करने की रिक्वेस्ट की। ध्रुव राठी ने भी एक वीडियो अपलोड की है, एग्जाम वर्सेस लाइफ। और फिजिक्स केमिस्ट्री के सबसे ज़्यादा फेमस टीचर अलक पांडे, इन्होंने भी रिक्वेस्ट किया पोस्टपोन जेई एंड नीट। और केमिस्ट्री के वेल नोन टीचर अरविंद अरोड़ा ने भी सेम रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट से। मैं भी एक जेई एस्पायरेंट हूँ और मैं भी यार यही चाहता हूँ कि जेई और नीट पोस्टपोन हो, कम से कम तब तक जब तक कोविड-19 की वैक्सीन नहीं बन जाती। लेट्स सी गवर्नमेंट का क्या डिसीजन होता है। तो अब आप सुब्रमण्यम स्वामी जी की इंटरव्यू की वीडियो देख लो। ऑन द इश्यू ऑफ द NEET, JEE and other competitive exams which have been due earlier but had to be postponed and is to be now commenced on Monday. The climate has not changed, which originally caused the postponement. In fact, in some ways it got worse because corona incidents have risen much more, and now it's heading towards the 3 million mark. And in one particular day, we have had more cases than any other country in the world, including the United States. So consequently, I would say that the circumstances have not changed, and therefore I don't see how you can
decide to have an examination when in these circumstances. For example, the exam centers are far away from people. They take Bombay, city of Bombay, where a lot of complaints have come to me. People living in Kalyan and Thane will have to go into the city, and sometimes you have to travel 20 kilometers, 30 kilometers. There's no public transportation. All the trains, people have got used to the trains that Bombay people use every morning to go to work and come back in the evening to the suburbs. Therefore, when there is no public travel provisions, how do you expect middle class, lower middle class, poor students to make it? And then what happens if they go to a crowded examination center, come back with the corona infection, and then give it to their old parents or their grandparents, who are much more susceptible to mortality from corona than the younger generation? So this is third. Third thing is that people have operated under very adverse circumstances, such as the floods in Assam and so many others, Odisha and so on. And how do you expect them to reach? And are the local people ready for it? I have talked to many of the local people. They say we have got only makeshift arrangements, and in these circumstances they are going to carry their pens, papers, etc. And what happens if it rains on the way? What happens if they don't have a waterproof bag to carry all this? So so much tension now that already 20 people have committed suicide. And if this crucial life make or break exam, they are not able to perform, their entire career is ruined, and even that tension will lead to a lot of people who will have committed suicide. There will be almost an epidemic of suicides of young people. I mean, it will be a ghastly shame. What is the big thing? I mean, put it after November, because I think now towards the end of this month, the peak for coronavirus incidents will be reached, and therefore I should expect by end of October that the whole thing will be in a much less, and most of the normal life would have been restored. So all right, then put it in November. I don't see what the difficulty is, because already the term which was to start in July couldn't start. So 6 months, if there is a war tomorrow, you have to anyway close down these schools. These are extraordinary circumstances for which the government must show flexibility. And I am surprised why this flexibility has not been shown. What did the Supreme Court say? They haven't put any ban on you. The Supreme Court said this is a policy decision of the government. The government can take whatever decision it wants. We'll stand by it. And so that tomorrow the government decides to change, the Supreme Court is not going to say contempt of court. There is no order saying no, you have to hold the exam of the Supreme Court. This is a false propagation that is being done. And there is a lobby. I know that lobby which I don't want to name just now because I need more proof. But I do know this much, that I'm convinced that there is a lobby which is, because a very high functionary of the government told me I'm under heavy pressure from this lobby. So I'm so grateful that you have come. Please see that you write a letter to the Prime Minister, which I've written. I've written a very strong letter to the Prime Minister telling him of these consequences. So I think there has been a meeting in the Education Ministry today, and I'm hoping that a favorable decision for the students will be taken so that they can have a better period for studying, because after Corona everything was disrupted. Even studying with a peace of mind was difficult for students, and I think I strongly recommend, as I recommended to my letter to the Prime Minister, that in the balance of conveniences it should be postponed. And I'm
expecting it will be postponed.